the value. And yesterday I had given you a homework also that come prepared for the core business values. Yesterday we had discussed about the general values, business values or general values. And now we will be discussing about the core business values. So core business values are partnership, differentiation, alignment, trust, and accountability. So these are considered as the five general core values of business. If we talk about partnership, here we are not talking about the partnership that exists between, say, two partners of an organization who have raised the capital and or who have set up the organization. But here we are talking about the relationship between the employees and the manager. So here on the slide itself, it is written that move away from boss, employee to mutually beneficial partnership. So here, this value, this business value, which talks about partnership, it concentrates on the relationship between the employees and the manager. It is not the relationship that existed earlier in the organization, that boss is always right and the job of the subordinate is to obey all the orders blindly of the boss. Boss has all the authority, boss knows everything, so whatever decision is taken by the boss is always correct. That was earlier. But if we talk about these business values, here the boss has to believe in the relationship, and this relationship is to be treated with equal dignity. Then only it can be called as partnership. In partnership, what happens? Both the partners, or if three partners are there, or if more partners are there, all the partners are given same authority, same respect. So that is what is expected in this value of partnership, that here same respect to the subordinates, to the employees shall be given by the boss, and that is called as partnership. And it should be mutual. It should not happen that boss has come down and boss has started respecting the employees and employees are taking undue advantage of the changed behavior of the boss. That is again not expected. It talks about mutual benefit. It talks about mutual respect. Mutual means from both the parties. Employees should respect their boss and boss should respect their employees. Before taking any decision, if possible, views or suggestions of the employees, subordinates should be considered by the boss. And that is called as partnership. Now, the second business value talks about differentiation. Now, under differentiation, what is expected is great businesses, a specific trait that differentiates them and they can be best at. So again, here, what is expected is that great businesses have a specific trait which differentiates them with the other businesses.
One organization may have such a trait, such a quality, such a practice for the development of employees, and that may differentiate that organization with other organizations. Now, if we talk about various multinational companies, if we talk about Google, if we talk about Facebook, now these companies have differentiated themselves from the other companies. Now, how they have differentiated? They have differentiated because of the open culture which they have implemented in their organization. If you might be aware of the work culture in Google, there are many facilities that are being provided to the employees so that they can be at their best always. Some of the facilities, such as that flexi time is being provided to the employees of Google. Flexi time means that even if the shift timing is say 8 to 4, flexible timing means if suppose one of the employees is having some bank work, bank related work, and he will be say late by 1 or 2 hours. So in other organization, the employee has to take at least half day leave to complete that bank related job. But in Google, where flexible timing concept is implemented, the employee, instead of taking a half day leave, he can just inform his superior, his boss, that because of this work, he will be coming late to the organization by an hour or so. He need not apply for half day leave. That is one of the facility which differentiates it from the other companies. Next facility given to the Google employee is that they can work from their home, or they can come down to the office. They can work from office. They can work from any place of their choice. They can work from theater. They can work from garden. They can work from hotel. So this facility is provided that you work, you decide from where you want to work. Only thing matters is you need to complete the work. Then another facility is that if an employee is having small children, or a child of say 2 years, 3 years, or maybe 4 5 years, in Google, crush facility is also provided to the employees, that the employees can bring their small children to the company, and company has provided a separate room, separate staff is being provided in the company, which takes care of the children of the child of the employees. Now, these are some of the facilities which are being provided to the employees of Google. And these facilities differentiate this company from the other company. Now, if such facilities are being provided, and if these facilities are known to the other employees of other organizations, what will happen? Whenever there are vacancies, the employees who are working in other companies, they will always check when there is an vacancy at Google, and they will try to
try to apply for that particular position. Why? Because they feel that it's a different company. And Google has shared that every year they receive not in thousands but in lakhs applications. Why they find lakhs of application? And the reason is very simple, because they have differentiated themselves from the other companies. The number of applications which they receive is such huge that instead of manual shortlisting, there is mechanical shortlisting. They have softwares developed which shortlist the application, which filter the application. Why? Because they have differentiated themselves. So that is the importance of differentiation. Next one is alignment. Now, for alignment, people need to be a part of something. Align the business core values of your team with the values of the team. It means, alignment means that all the employees, right from top to bottom, should have a same goal. It should not happen that top management has set one goal, middle management has set another goal, and the lower management is after another goal. If such thing happens, we cannot say alignment is there. Alignment is when all the employees working in an organization, they are moving in one direction only. When the core values of the organization are aligned with the organizational goal, then we can say that there is an alignment. So it has to be mixed. It is to be integrated. जब तक एम्प्लॉई के वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज दोनों भी एक नहीं होंगे, दोनों भी अलाइंड नहीं होते, तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिनों तक, ज्यादा वर्षों तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती. You can be successful for a shorter period of time, but if you want to be successful over a longer period of time, then you need to the organization has to see to it that there is an alignment between the employee values and the organizational values. If the employees feel that as they are human beings, they should be respected by the higher authorities. They should not be abused by the higher authorities. The higher authorities should not have a mindset that as they are sitting at the higher level of the hierarchy in the organization, so they know everything, and the people who are working in the organization at lower level, although they are working in the organization for say maybe 10 years, 15 years or 20 years, but as they are working at a lower level, they are supposed to only follow the orders. If such are the values of the organization, then we can very easily say that there cannot be alignment. Alignment means that the human value of employees shall meet with the organizational value. जब तक दोनों वैल्यूज मिक्स नहीं होंगे, तब तक अलाइनमेंट नहीं हो सकता, तब तक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल लॉन्ग रन में नहीं हो सकती.
Now the next one is called as trust. Trust, we all know what is the meaning of trust. Trust your team members. Build trust by providing skills. ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आपको अपने एम्प्लॉइज पे, अपनी टीम पे भरोसा नहीं होगा, तब तक टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी. सो टीम पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है. अगर गलती भी होती है तो समझाना टीम को बहुत जरूरी है. नो प्रॉब्लम, इफ यू हैव फेल्ड टू अचीव द टारगेट दिस टाइम, next time definitely you will achieve the target or you will exceed the target. So a manager has to motivate or encourage the team. So when he will or she will motivate or encourage his or her team, when the manager trusts the abilities, the skills, the knowledge of the team members. If the manager doesn't trust, if he knows or if he is of the opinion that his team doesn't has the skill set required to achieve the target or to exceed the target, if the manager is having that mindset, that means he doesn't trust his team. And if he doesn't trust his team will also not trust the abilities of the manager, which will ultimately be loss for the organization. I might have given you the example of our late president, Dr. APJ Abdul Kalam. Those who have read the book Wings of Fire, in that book there is an incidence which is being quoted. That incidence is related to a satellite launch. Dr. APJ Abdul Kalam was part of the team which was given the responsibility to launch the satellite. They worked hard on the project. The entire team worked very hard on the project. On the day of launch, everything was planned well. But because of something, because of some mistake, which was not predicted by the team, the launch failed. And it was the fault of one of the team member. जो भी टीम मेंबर थे, 4, 5, 10 जितने भी टीम मेंबर थे, मेहनत बहुत की, पर किसी वजह से वो लॉन्च जो था वो अनसक्सेसफुल रहा, वो लॉन्च फेल हो गया. लॉन्च बहुत बड़ा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी. तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करना था, as the team was led by Dr. APJ Abdul Kalam, जो टीम में वो सीनियर थे, तो उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करनी थी और उनको कारण बताना था कि क्यों वो सैटेलाइट लॉन्च फेल हुआ. तो वहां पर क्या हुआ कि जो उनके डिपार्टमेंट हेड थे, वो डिपार्टमेंट हेड ने ये डिसाइड किया, उन्होंने अब्दुल कलाम जी को बोला कि आप मत जाइए, मैं जाके बताता हूं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो डिपार्टमेंट हेड went to the press conference and he took the entire responsibility of that failure. फेलियर किसका था? टीम का फेलियर था. पर कौन गया? डिपार्टमेंट हेड, ऑर्गेनाइजेशन का हेड जाके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि ये मेरा फेलियर, बट आई नो that my team is very much capable.
My team is very much talented, and very shortly they will overcome this failure, and within a short span of time we will be able to successfully launch the satellite. और कुछ समय के पश्चात सक्सेसफुली वो सैटेलाइट लॉन्च किया गया, और जब सक्सेसफुली लॉन्च हुआ तो अगेन देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड दैट टाइम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही सेड that instead of me now, the head of the team should go and he should conduct that particular address, that particular press conference. तो हमें सिर्फ ये जानना है कि कितना भरोसा, इतना अगर आप अपनी टीम पर ट्रस्ट करते हैं, इतना अगर आप टीम पर भरोसा करते हैं, तो टीम भी 100% से ज्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश करेगी। 8 घंटे की जगह वो 10 घंटे काम करने की कोशिश करेंगे, 12 घंटे काम करने की कोशिश करेंगे। Why? Because they know that our boss trust us and we need to see to it that that trust is not broken, चाहे उसके लिए हमें ज्यादा काम भी क्यों ना करना पड़े। तो जब फेलियर की बात आई तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जाके बोलते हैं कि मेरी वजह से फेल हुआ, पर जब सक्सेस की बात आई तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये बोलते हैं कि नहीं, पूरा टीम का श्रेय है, टीम ने मेहनत की, इसीलिए उसका फल भी टीम को ही मिलना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बॉस है जो अपनी टीम को इतना ट्रस्ट करता है, then be sure that that organization is going to grow. Why? Because the team will make sure that they will achieve the target, चाहे उसके लिए कितना ही काम क्यों ना करना पड़े, and that is called as trust. Next one, accountability. Every team member needs to be accountable for their action and lack of action. Yes, anyone who can explain this? As it was a homework, you might have prepared on this. Yes, anyone who can elaborate on this? Last important business value, accountability. Every team member needs to be accountable for their actions and lack of actions. What does it mean? Anyone? I hope my voice is clear to all. मेरी आवाज क्लियर है क्या आपको? मोहित सर, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, कौन बोलेगा? बताइए, क्या पढ़ा आपने? फास्ट। यस। What is accountability here? Anyone? Unmute yourself and go ahead. It is very simple. Every team member needs to be accountable for their action and also lack of action. दो चीजें कही गई हैं, एक एक्शन और दूसरा लैक ऑफ एक्शन। बताइए, what is that? Hello. Yes.
यस, बोलिए कौन बोल रहे हैं? हेलो। So here, accountability. Now everyone is aware of the meaning of accountability. So we will not go into that what is the meaning of accountability and how it is different from responsibility, that everyone is aware of. Now here we will talk about that what is expected in accountability, what is included. So uh, what is expected is that every team member should be accountable for his or her action. तो जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, सपोज एक 4 लोगों की टीम है, 4 लोगों की टीम को एक काम दिया गया। अब वो काम करने के लिए छोटे छोटे डिसीजन लेने थे, तो जो भी डिसीजन लिया है टीम ने, तो वो सबका डिसीजन अगर है, तो अगर वो डिसीजन की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो ऑल द टीम मेंबर शुड टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट डिसीजन. It should not happen that one person in the team start blaming the others. कि मैं तो बोल रहा था पर ये 3 लोगों ने बोला, इसीलिए फिर हम लोगों ने डिसीजन ले लिया और फिर ये गलती हो गई. That is not accountability. Accountability means कि अगर जीत हुई तो भी हम सबकी वजह से हुई, टीम की जीत है. हार हुई तो भी टीम की हार है. तो एक्शन एंड लैक ऑफ एक्शन, जितना कमिटमेंट सब मेंबर्स ने देना चाहिए था टारगेट अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए, उतना कमिटमेंट दिया ही नहीं. उतना कमिटमेंट दिया नहीं, इसीलिए टारगेट अचीव हुआ नहीं. दैट इज लैक ऑफ एक्शन. बट लैक ऑफ एक्शन ऑन हुज पार्ट? तो लैक ऑफ एक्शन ऑन द टीम्स पार्ट. जब इंडिया कोई मैच खेलती है, या अभी जो T20 का मैचेस चल रहे हैं, कोई भी टीम जीतती है, तो क्या कहा जाता है कि वो टीम जीती. सिर्फ कैप्टन खेला, या सिर्फ ऐसा बोला जाता है कि कैप्टन जीत गया या वो बॉलर जीत गया. तो अगर जीती है तो पूरी टीम जीती है, हारी है तो भी पूरी टीम हारी है. So every person in the team should be accountable for the action or lack of action. एक बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, एक ही ओवर में 30 रन चले गए, इस वजह से टीम हार गई. क्या कभी कहा जाएगा कि वो बॉलर की डिफीट है? तो हमेशा यही कहा जाता है कि टीम की डिफीट है. व्हाई टीम की डिफीट है? बिकॉज जो टीम एफर्ट होना चाहिए था, जो टीम मोटिवेशन होना चाहिए था, जो टीम एनकरेजमेंट होना चाहिए था, एक छक्का लगने के बाद पता चल गया कि उसकी बॉल गलत हो रही है, तो या तो उसे प्रॉपर गाइड नहीं किया गया कि वो वापस उसी जगह पे बॉल डाल रहा था और छक्का पड़ रहा था. दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी. So these are some of the important business values. Now we will move on to the values of Indian managers. So in the initial stage, initial sessions, we had discussed the difference between the Indian managers and Western managers also. What are the values of Indian managers and what are the values of managers in the Western countries? That we had discussed. Now we will try to discuss the values of Indian managers.
It is not that these are the fixed values. It is not that every manager will exhibit these values, but it is expected that the managers should have these values because of our Indian culture, where we give more importance to human being than the mechanical machines. So some of the values of Indian managers that we will be discussing now. First one is respect for individual. Just now we had discussed that individuals, that means employees, should be respected. Because the employees are human beings, they are living beings. So they should be treated with respect, and they should be given more importance than the machines. It should not happen that the organization has machine where each machine is costing the organization 5 lakh rupees or 10 lakh rupees or maybe more than that. As the cost of the machine is very high, the organization is giving more importance to the machines than the people who are working on those machines, that is the employees of the organization. Then it is not Indian values. The values, Indian values of managers are, these are the values which we have derived from the Indian culture, from our parent, from our friends, from the society. And right from our childhood, we have learned that we have to respect a person. Why we have to respect? Because he is a living being, he is a human being. हमारे को बचपन से सिखाया जाता है कि हर इंसान की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए. Even if a person, say, who is very poor or who is a beggar, that person should also be seen with respect and treated with respect. And that is called as respect for individual. One of the values of Indian manager, expected value. Next, in cooperation and trust. Trust, we have just discussed that what is the meaning of trust and how important trust plays a role in the success of a team or in the success of an organization in general. Cooperation means here the managers cooperate with the subordinates. They understand the problem of the subordinate and they try to solve those problems of the subordinate. That is one of the values. We are more emotional as compared to the Western people. हमारे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि we need to give importance to relations. We have to respect the relations. ये हम लोग बचपन से ही सीखते हैं. पर जितना हम इमोशनली होके सोचते हैं, अगर एक इंडियन को डिसीजन लेना है, एक इंडियन मैनेजर है जिसको डिसीजन लेना है और दूसरा एक वेस्टर्न मैनेजर है जिसे डिसीजन लेना है,
तो ज्यादातर केसेस में इंडियन मैनेजर का जो डिसीजन रहेगा, इन दैट डिसीजन देयर विल बी involvement of both the organ of the body, and both the organ means brain as well as heart. But if a decision is to be taken by a Western manager, then on more occasion, we are not saying that always it will happen, but on many occasion it may happen that the decision will be taken with only brain. जो दिमाग कहता है वही डिसीजन, जो दिल कहता है वो नहीं। ये वेस्टर्न सोच है, वो वेस्टर्न वैल्यू है जो मटेरियलिस्टिक है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। हमारे यहाँ पे प्रॉफिट के साथ ह्यूमन वैल्यूज जुड़ी हुई। तो यहां पर क्या है कि कोऑपरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एज एन इंडियन वी गिव, और हमारे यहाँ पर जैसे वहां के लोग ज्यादातर दिमाग से सोचते हैं, ज्यादातर डिसीजन दिमाग से लेते हैं, हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग हार्ट से सोचते हैं, दिल से। और डिसीजन भी ज्यादा पार्ट, अगर हम लोग बोलते हैं कि दोनों पार्ट, दोनों ऑर्गन जुड़े हुए हैं, दोनों ऑर्गन मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि 50% से कम दिमाग इन्वॉल्व रहता है और 50% से ज्यादा दिल इन्वॉल्व रहता है। So that is cooperation and trust. Next one is non-jealousy. Jealousy, we all are aware of कि what is the meaning of jealousy. Non-jealousy, again, non-jealousy मतलब कि एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना, that is non-jealousy. अगर एक आगे बढ़ रहा है तो उसके अगर पैर खींचे जाते हैं तो that is jealousy. अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है कि जहां पर हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रो करने के लिए, देयर वी कैन से दैट नॉन जेलस atmosphere or environment is being provided in the organization. So Indian managers, one of the value of Indian manager is non-jealous. Next one, purification of mind and noble thoughts. Now, as right from the childhood, we hear or we study or we learn from some source or the other about our great scriptures. महाभारत में क्या है, जरूरी नहीं है कि हम सबने वो पढ़ना ही चाहिए, पर किसी ना किसी, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, दूरदर्शन हो, कोई और चैनल हो, मैगजीन हो, कोई लेक्चर्स हो, कहीं ना कहीं से हमारे को ये बचपन से ही मिलता रहता है कि वेदों में क्या लिखा है, या रामायण की कहानी क्या है, या फिर महाभारत में क्या है, या फिर गीता उपदेश क्यों दिया गया और उसका सार क्या है। तो ये सब चीजें हमारे को जब बचपन से पता चलती हैं, तो बड़े होने तक जब वो मैनेजर बन जाता है, या आप भी जब मैनेजर बनेंगे, तो ये एक क्वालिटी हम में रहती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड और नोबल थॉट्स। अच्छे विचार अगर आपके अंदर आएंगे तो आपके डिसीजन उसी प्रकार से अच्छे रहे। अगर आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक सोच रखते हैं तो शायद आपके विचार भी वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट वन, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. This we all are aware of what is the meaning of top quality. If an organization wants to be in the competition for a longer period of time, the organization has to ensure that not only the quality of the product should be superior, should be the best, but also now
the most important part is that the after sale service. एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने बहुत अच्छी कार बनाई, द बेस्ट उसकी इंजीनियरिंग है, और उन्होंने वो कार एक कस्टमर को बेच दी। कार में कुछ प्रॉब्लम आया, 10 साल के बाद हम लोग बोलेंगे। पर अगर आफ्टर सेल्स वो कंपनी का अच्छा नहीं है, तो क्या ये कस्टमर रिटेन वो कंपनी कर पाएगी? या इस कस्टमर की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि 4 कस्टमर जो एग्जिस्टिंग कंपनी के थे वो भी शायद कंपनी को छोड़ के चले। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, बैड वर्ड ऑफ माउथ। द कस्टमर मे से that I had paid 50 lakh rupees for this particular car, but the after sales services is not up to the mark. If this bad word of mouth is being spread by a customer, that may affect other customers also of the company. And that is why not only top quality, not only the quality of the product should be best, but your after sales services should also be best. And nowadays we all are aware of what role social media plays in branding a company. उसकी इमेज अच्छा भी कर सकता है सोशल मीडिया, उसकी इमेज खराब भी कर सकता है। सपोज आपके पास कार है और आपको जिस भी कंपनी की कार है, आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही, आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। इमीडिएटली you will receive a call from the company or from the dealer or from the concerned service center of that particular company. Why? Because each and every company has realized now that how important is after sales services, and there are now number of platforms where you can now share your feelings. आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी किसी कंपनी की, अगर आपने वहां पर डाल दिया तो इससे वो कंपनी की बदनामी होती है, उसका ब्रांड अफेक्ट होता है नेगेटिवली, और वो अवॉइड करने के लिए कंपनी आजकल कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज हम लोग कैसे दे सकते हैं। इन मार्केटिंग यू माइट हैव रेड अबाउट कस्टमर डिलाइट ऑल्सो, कि अर्लियर द कंपनी यूज्ड टू टॉक अबाउट customer satisfaction. Now the companies are talking about customer delight. Why? Because everyone has realized that not only top quality of product should be there, but top quality service should also be there. Next one, work is worship. Work is worship. ये तो हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं, वर्क इज वर्कशिप। ये वैल्यू हमें पहले से ही रहती है, हर ज्यादातर मैनेजर्स में ये वैल्यू रहती है, जहां पर हम लोग काम को, वर्शिप मीन्स पूजा, काम को ही अपनी पूजा मानते हैं। सो दैट इज देयर। नेक्स्ट वन, ethical and moral soundness. If a manager who believes in Indian culture, who believes in Indian ethos, will definitely be ethical in nature. वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक सोच नहीं रखेगा, वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा या गलत तरीका नहीं अपनाएगा, चाहे वो किसी को प्रमोशन देने का हो, चाहे वो किसी को ट्रांसफर करने का हो, चाहे वो किसी को टर्मिनेट करने का हो। All the decision of the manager will be ethical in nature. Next one, self discipline and self restraint. Self discipline. A manager has to be first self disciplined. मतलब
अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं तो पहले आपको डिसिप्लिन क्या है वो समझना होगा, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी डिसिप्लिन रहेंगे, आपकी जो टीम है वो भी डिसिप्लिन रहेगी. सो दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ रेस्ट्रेंट मीन्स you should be, as a manager you should be aware of the fact that where you should have, you should keep yourself, say a point should be there. एक क्या बोलेंगे उसको, कि हर व्यक्ति को, हर मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि कितना हमें शाउट करना चाहिए या कितना किसी पे चिल्लाना चाहिए, कब नाराज होना चाहिए, कब अपनी नाराजगी छुपानी चाहिए. बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा पोलाइट रहेंगे तो भी आप सक्सेसफुल मैनेजर नहीं हो सकते. यू आर वेरी एग्रेसिव एंड वेरी अब्यूसिव इन लैंग्वेज, अगेन you will not be successful. So too much politeness is again not good for the manager. Too much aggression or abusive language is again not good for the manager. So it has to be a combination of both. The manager should know that where to stop and where to start. कब टीम मेंबर को डांटना है और कब उसे प्यार से समझाना है, ये दोनों चीजें मैनेजर को पता होनी चाहिए. और इंडियन मैनेजर्स में ऐसा पाया गया है कि ज्यादातर मैनेजर्स में ये क्वालिटी होती है. नेक्स्ट वन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Now customer satisfaction, we all are aware of what is customer satisfaction. We have just discussed customer satisfaction in terms of quality of the product, customer satisfaction in terms of after sales services of the product, both. तो कस्टमर, हमारे यहाँ पर पहले से ही कहा गया है कि कस्टमर इज किंग. तो अगर आप राजा को नाराज कर देंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे. राजा खुश तो आपका भी प्रोग्रेस होता रहेगा. सो कस्टमर इज किंग. हम लोग बहुत पहले से ये मानते हैं कि कस्टमर इज किंग. सो वी शुड, जैसे हम राजा की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ने, वैसे ही मैनेजर ने कस्टमर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर ही वो व्यक्ति है जो आपकी कंपनी को प्रॉफिट्स दिलाने वाला है. अगर आप कस्टमर को निग्लेक्ट कर देंगे देन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी विल. नेक्स्ट वन इज क्रिएटिविटी. Creativity, everyone is aware of now about creativity. That is the buzzword that you should come up with some creative things. नहीं, अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी, एक ही चीज हम लोग करते गए तो शायद एक समय आएगा कि वो कंपनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. जैसे अभी एक छोटी सी कंपनी, कोई भी एक स्मॉल एग्जांपल, आइसक्रीम. अभी आइसक्रीम, गर्मी का सीजन है, आइसक्रीम बहुत पॉपुलर. हर साल हम लोग देखते हैं कि कंपनीज कुछ ना कुछ नया आइसक्रीम्स में ऐड करती रहती हैं. कभी आइसक्रीम केक्स आ रहे हैं कि बर्थडे केक में केक ले जाने की जगह आप आइसक्रीम भी लेके जा सकते हैं. वो आइसक्रीम केक का भी टेस्ट देगी और आइसक्रीम का भी टेस्ट देगी. कभी कंपनीज ऐसा बनाती हैं कि बर्गर टाइप आइसक्रीम रहेगी या सैंडविच टाइप आइसक्रीम रहेगी, ऊपर से 2 बिस्किट और बीच में आइसक्रीम. तो ये सारी चीजें कंपनी नया नया क्यों कर रही है?
एक बार फ्लेवर जब बन गए कि ये मैंगो फ्लेवर है, ये ऑरेंज फ्लेवर है, ये वनीला फ्लेवर है, ये चॉकलेट फ्लेवर है, सालों साल कंपनी वही फ्लेवर, सिर्फ वही फ्लेवर क्यों नहीं चलाती? हर साल कंपनी क्यों नए नए फ्लेवर इंट्रोड्यूस करती है? बिकॉज द कंपनी नोज कि अगर स्टैग्नेशन हो गया, अगर क्रिएटिविटी कंपनी की बंद हो गई तो कंपनी ही बंद हो जाएगी। तो जो कंपनी क्रिएटिव होती रहेगी वही कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, दूसरी कंपनीज बंद हो जाएगी। दैट वी हैव सीन कि बहुत सारी कंपनी जो पहले टॉप कंपनीज थी वो बंद हो गई। नोकिया अभी हम लोग नाम भी नहीं सुनते, जो 20-22 साल तक वर्ल्ड की नंबर 1 टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, आज उसका नाम भी नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन क्रिएटिविटी कि हमें कुछ नया लाने की जरूरत ही नहीं, हमारी क्वालिटी ही इतनी अच्छी है प्रोडक्ट की, सालों साल 20 साल से हम लोग नंबर 1 है, अगले और कई सालों तक हम लोग नंबर 1 रहे। क्रिएटिविटी हुई बंद, कंपनी हो गई बंद। So that is the importance of creativity. Next one, inspiration. Now inspiration. Now who is going to inspire the team? Who is going to inspire the employees? So it is the managers. कौन इंस्पायर करेगा, कौन उनको गाइड करेगा? तो इट इज द मैनेजर। तो मैनेजर अगर केपेबल रहेगा, मैनेजर अगर टैलेंटेड रहेगा, तभी वो इंस्पायर कर पाएगा। अगर मैनेजर सिर्फ रिलेशनशिप या उसका कोई रिलेटिव बहुत ऊंची पोजीशन पे था उस कंपनी में, उस बेस पर अगर उसको सिलेक्ट किया गया और उसको कुछ भी नहीं आता है, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू इंस्पायर अदर्स। इंस्पायर करने के लिए आप में पहले उतनी काबिलियत होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन बी द रोल मॉडल फॉर योर टीम। अगर मैनेजर को ही कुछ नहीं आता तो वो क्या रोल मॉडल रहेगा अपनी टीम का? नेक्स्ट वन, renunciation and detachment from selfish demands. Last and very important, renunciation. हम लोग पहले से ही उस चीज में बिलीव करते हैं कि कितना भी हमने कमाई कर ली तो जाते वक्त वो सारी कमाई हमारे को छोड़ के जानी। इसीलिए एक हद तक कमाई करने के बाद हमें बताया जाता है, अगर आप कीर्तन में जाते हैं, अगर आप किसी भी कीर्तन को सुनिए, हर कीर्तन का एक ही मकसद रहता है या एक ही लर्निंग रहती है। और क्या लर्निंग है वो? कि अगर आपका वो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, जहां पे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो आपने हमेशा करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो मरने के बाद भी आपका नाम रहता है, नहीं तो आपका नाम मरने के बाद खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद भी हम लोग जानते हैं। Why? Because they believed in renunciation and detachment. That is very important. So we will stop here. In tomorrow's session, we will try to complete the first unit. So thank you everyone for being present in today's session. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.